चलो, a block of ice at negative 10 degrees Celsius is slowly heated and converted into steam at 100 degrees Celsius. Which of the following curves represent the phenomena qualitatively or whatever. So पहले क्या है, उसको तुम हीट करो, लाइक 0.5 स्लोप रहेगा, उसके बाद में तुम हीट करोगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. हीट सप्लाइड ये स्लोप अलग होगा, ये स्लोप थोड़ा बड़ा होगा इससे, राइट, ये हाफ दिख रहा है. फिर या लेटेंट हीट और फिर ये दैट मेक सेंस, श्योर. और ये टेम्परेचर है, राइट. सो इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर जैसे तुम हीट सप्लाई कर रहे हो. तो ये अजीब है, ये ऐसे ऊपर एकदम डायरेक्टली नहीं जाता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये भी अजीब दिख रहा है बिकॉज ये स्टार्ट में कुछ भी नहीं है. सो हाँ, नेगेटिव 10 डिग्री सेल्सियस, राइट. टेम्परेचर क्या है, टी इन वॉट, इट्स इन डिग्री सेल्सियस और वॉट. या एंड कन्वर्टेड इनटू स्टीम, राइट. सो इसमें दो लेटेंट हीट्स लगने वाले अपने को. सो इट्स द थिंग. ओके, ये मुझे पता नहीं यहाँ पे एक्जैक्टली हो गया है. अगर अपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखें तो फिर इट दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव ऑल ऑफ द टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द T in absolute temperature. Consider the reaction. This reaction calculate delta U if 3 moles of H2 is completely reacted with 3 moles of Cl2 to form HCl. So delta H is just this thing. Okay, yeah, delta U निकालना अपने को. Oh, so the thing is like, wait a second. Okay, so the thing is delta H is just equal to delta U plus delta PV. So delta U is just delta H minus क्या RT times delta N gaseous, right. So इसमें RT कितना है, temperature is 300 Kelvin, so like 300 times, और सब कुछ अपने को SI में चाहिए. So like 8.3 times 300, so 24 and 9, so like 8.3 times 30, so 24,2490 joules, right. Okay, delta N gaseous, okay, ये joules, and you want in like kilojoules, so it should actually be 24.9. So 24.9 kilojoules, right. Yeah, and you just want in, once again, delta U in kilojoules. once again वही है ना, ये क्या 8.3 times 300, so 83 times 30 मतलब कि 2490, which is 2.49, yeah, kilojoules. Oh, okay, 24, yeah, it should be 2.49. मैं क्या कर रहा हूँ ये. So 2.49 kilojoules negative of that. डेल्टा एन गैसेस कितना है इसमें, 0. सो ये तो एक्चुअली मर जाएगा. ओह, मैंने पहले क्यों नहीं कर डाला ये. या देन इट जस्ट डेल्टा यू बेसिकली. So 3 times of this thing, right, which is, I guess it's this. Wait, oh, okay, this is not the thing. Delta U अपने को देखना है when this is with that. It should be negative, sure. This is like per mole. That's kind of weird. And RT is like, then gaseous is just 0. So it's none of these because it should be negative 3 times of this thing, right. That is delta U. और वो नहीं है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस कुछ सॉलिड था इसमें, नहीं, कुछ भी सॉलिड नहीं है. सो इट हैज़ टू हैपन लाइक दैट. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, W1, W2, W3 आर वर्क डन बाय सिस्टम इन आइसोथर्मिक, आइसोथर्मिक, एडियाबैटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस. ओके, द करेक्ट ऑर्डर फॉर एक्सपांशन. सो 1 क्या है, आइसोथर्मल. ओके, आइसोथर्मल. फिर ठीक है, हो जाएगा, नो बिग डील. सो 1 की बात करता है आइसोथर्मल के लिए. आइसोथर्मल के लिए तुम्हारा वर्क डन क्या है, इट्स जस्ट द सेम थिंग एज, वेट, वर्क डन, ओ या इट इज दिस थिंग, nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 upon V1. सो दैट्स द वर्क डन. सो लाइक सपोज तुम्हारा V2 बड़ा है, देन वेट, और इट एक्चुअली डिपेंड्स, राइट. तुम्हारा V2 बड़ा है कि छोटा है. सो तुम्हारा एक्सपांशन कर, तुम्हारे ऊपर निगेटिव वर्क हुआ होगा, बट तुमने वर्क पॉजिटिव किया, राइट. सो इट्स सपोज टू बी दिस थिंग. ओके, कूल. एडियाबैटिक, वर्क डन इज सेम थिंग एज द चेंज इन एनर्जी. सो इट्स जस्ट NCV डेल्टा. ओके, कूल. ओके, बट किस चीज़ के लिए, आई डोंट नो. NCV डेल्टा T, राइट. ओके, wait, but I don't get it. This doesn't make any sense.
एडियाबैटिक श्योर। ओ आई थिंक ओके, ऐसा हो रहा है कि वॉल्यूम्स जो है वो V2 V1 फिक्स्ड है और बाकी सब तुम चेंज कर पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, राइट? दैट हैज़ टू बी द थिंग। ओके, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड। ठीक है, सो जस्ट NCV डेल्टा टी, राइट? सो मैं इसको लिखता हूँ T1 यहाँ पे, सो दैट यू गेट द थिंग। सो NCV डेल्टा टी, दैट इज द वर्क डन, राइट? which it's the work done by, अपने को चाहिए ओके डेल्टा U प्लस, राइट, नो, जितना अपना वो हुआ प्लस W, राइट, दैट्स इक्वल टू 0, राइट? मतलब जो, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, यूजुअली अपन वर्क डन ऑन द सिस्टम लेते हैं तो फिर अपना डेल्टा U में वर्क इंक्लूड होता है। इस केस में क्या हो रहा है, निगेटिव देना पड़ेगा, राइट? सो निगेटिव डेल्टा U इज व्हाट इज द वर्क डन बाय अस, right? So work done by the gas. So it's negative NCV delta T, मतलब कि negative NCV and then you got T2 minus T1, right? Okay, this is not good. And it's what, adiabatic, so we will have to use this thing, TP power F upon 2 is equal to constant. So then, you know, yeah, it's just like V2 upon, oh, this is not going anywhere, right? ये सही नहीं हो रहा है। और क्या है, so that's adiabatic, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यार करने की ज़रूरत तो है लेकिन ये यू नो। सो इसकी पावर नेगेटिव F अपॉन 2, दैट्स सपोज टू बी द थिंग्स लाइक T1, दैट्स अवर T2, राइट? सो इट्स जस्ट T1 ओवर हियर एंड देन यू हैव, काफ़ी मर जा रहा है ये, एंड देन यू गॉट दिस थिंग V2 अपॉन V1 to the power of negative F upon 2 minus 1, right? Of course. सो दिस इज़ द थिंग। और यहाँ पे नेगेटिव का मैं यूज़ करके इसको चेंज कर सकता हूँ। H is going to be this thing NCV T1, then you got 1 minus V1 upon V2 की पावर अपॉन 2। अज्यूम करो कि V2 बड़ा है, राइट? तो ये 1 से छोटा कोई तो भी नंबर है और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कोर्स इससे बड़ा या इक्वल रहेगा। सो दिस इज एक्चुअली 1 से छोटा नंबर की पावर 3/2 और समथिंग लाइक दैट, राइट? सो और भी 1 से छोटा नंबर, मतलब कि 1 माइनस, या इट्स बेसिकली लेस देन दैट, राइट? इट्स काइंड ऑफ अ वियर्ड थिंग बिकॉज डिपेंड करता है कि V1 V2 कैसे है, राइट? सो एडियाबैटिक के बारे में अपन कुछ खास बोल नहीं सकते। सेकेंड का नॉट अ गुड आइडिया। थर्ड के लिए क्या है, आइसोबारिक, राइट? सो सेम प्रेशर, देन व्हाट्स द वर्क डन, राइट? इट्स जस्ट P delta V. So and isn't that like delta PV? So NR delta T I would say, okay. NR, once again ये अजीब चीज़ हो रही है यहाँ पे। So it's supposed to be T2 minus T1, right? Hey, okay, you can use at least this thing कि इसमें, अच्छा वो जो स्टेट है, राइट, वहाँ पे जो टेम्परेचर, दिस इज़ वेरी वियर्ड, ये क्वेश्चन ही अजीब है। ऑल वी नो इज़ कि बट लाइक ये जो अपन यानी प्रोसेस कर रहे हैं एग्जैक्टली वो कौन से दो पॉइंट्स के बीच में है कि हो क्या रहा है, कोई यानी वॉल्यूम्स V2 V1 फिक्स्ड है क्या, वी डोंट नो एनीथिंग एंड मोस्ट लाइकली अपन जो करेंगे वो इनकरेक्ट ही रहेगा। सो ओके, आइसोकोरिक तो 0 होगा, राइट? इस एक्सपांशन तो आइसोबारिक, मतलब वर्क एटलीस्ट हुआ तो है, राइट? बाकी सब में भी वर्क हुआ है बायस। सो yeah, like isocaric, for that it should be the least or something like that. That is adiabatic. At least work हो तो रहा है इन केसेस में, right? So isocoric, it's the least work because you know no change. This is not making any sense though. TW4 हर जगह पे least में आने वाला है, okay. This is really not making any sense. और ये चीज़ क्या हो जाएगी basically, it's just T1 और फिर you know T2 is proportional to V, so V2 upon V1 minus 1. Not good. ये बड़ा है कि ये बड़ा है, that's like saying is x minus 1 bigger than natural log of x. So अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ x minus natural log of x minus 1, so इसका डेरिवेटिव लेने पे 1 minus 1 upon x मिलता है and okay it's nothing. पर कुछ बोल नहीं पा रहे इसमें से, और एटलीस्ट x इज बिगर देन 1 दैट वी नो। सो फिर ये जो चीज़ रहेगी दैट्स एक्चुअली लेस देन 1, सो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ओके। मतलब ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, जब x इक्वल टू 0 है तो ये कुछ हो जाएगा। ओ गॉड, या वेल दैट डिडंट गो सो वेल।
एक्स इक्वल टू जब 1 है तब क्या है, देन इज जस्ट 1 - 1 जस्ट 0. ओके, तो उसके आगे जब बढ़ेगा देन इट विल एक्चुअली इंक्रीज. सो इसका मतलब कि हाँ ये एक्चुअल में बड़ा रहेगा, ये 1 पे इक्वल था, सो अब ये बड़ा हो जाएगा, राइट. आई गेस दैट मेक सेंस. तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट दिस इज एक्चुअली बिगर देन दैट्स लाइक 3 बिगर देन 1 हो जाएगा इन दैट केस. सो वर्क डन बाय 3 इज बिगर देन वर्क डन बाय 1. ये तो हर जगह पे हो रहा है. अच्छा, इसमें नहीं हो रहा है, राइट. तो इन दोनों में से अपने को चूज़ करना है, अपने को W1 और W2 को कंपेयर करना पड़ेगा, ये कि ये. सो इसमें ऐसा हो गया ना, 1 - x पावर, इसमें x भी नहीं है, 1/x है, राइट. सो x पावर -f/2 ले लो. इज दिस बिगर देन नेचुरल लॉग ऑफ x. वंस अगेन सेम काइंड ऑफ चीज़ करते हैं, इसको उधर ले जाओ. सो इसको सामने लिया, f/2 x पावर होप सो मैं करेक्ट कर रहा हूँ इसमें. सो -f/2 -1, राइट. सो -1 + f/2, इसको तो लिखिए -1/x. या दैट्स अवर डेरिवेटिव. सो x इज़ लाइक, अच्छा ये कैसा हो जाएगा, f/2, 1/x कॉमन निकाल लो इनफैक्ट, देन इज जस्ट 1/x की पावर f/2 -1, राइट. सो बिकॉज x इज बिगर देन 1, ये जो चीज़ रहेगी दैट्स आल्सो लाइक बिगर देन 1. सो ये चीज़ इज लेस देन 1, सो ये निगेटिव हो गया, मतलब कि एक्चुअली उल्टा होना चाहिए. या बिकॉज एट x इक्वल टू 1 दिस इज एक्चुअली इक्वालिटी, तो फिर ये उल्टा चाहिए, राइट. विच मीन्स कि ये एक्चुअल में छोटा वर्क है. या सो W1 बिगर देन W2. So this is the thing. Next question. यार इसमें तो बहुत टाइम लग गया. What is the delta U for the process described by the figure? Heat supply during the process Q is equal to 100 kilojoules. Delta U for the process described by the figure. क्या हो रहा है इसमें, ऐसा और फिर ऐसा, जस्ट उतना ही हुआ और कुछ भी नहीं. सो या बस PV देख लो ना, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे. ये जस्ट 1 बार 1 मीटर क्यूब और फिर 2 बार 2 मीटर क्यूब, वॉट एवर. हीट सप्लाई तुमने मुझे बोल दी है. वर्क डन आई कैन एक्चुअली फिगर आउट, बट चलो ठीक है, वॉट एवर. क्या वर्क डन हुआ है, यू नो इसमें हो क्या रहा है, एक्सपांशन. सो लाइक नेगेटिव वर्क हुआ होगा उस पे, गैस पे. सो कितना, हाइट है 1, ये है 1, हाफ ऑफ दैट, एंड दिस इज लाइक बार मीटर क्यूब. 1 बार इज समथिंग लाइक 10 पावर -5, राइट. सो 10 पावर -5 in SI units. So half of 10 power -5, right? Oh, 10 power, not -5, 10 power 5. So itne joules, right? Which is like 100/2 kilojoules, मतलब कि 50 kilojoules. So delta U is just 50 kilojoules. Cool, positive, because -50 kilojoules इस पे वर्क हुआ, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझे वैसे नॉर्मली करने का भी इच्छा है, बट देन लेट इट बी. व्हाट इज़ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी व्हेन अ गैस contracts from 377 milliliter to 177 milliliter under a constant pressure of something, okay, while at the same time being cooled by removing 124 joule heat. वॉल्यूम चेंज दिया, प्रेशर दिया है, but at the same time being cooled by removing, अच्छा कांस्टेंट प्रेशर बढ़िया. सो cooled by removing this much of, तो अपने को चाहिए चेंज इन एनर्जी. कूल, ये जस्ट -124 प्लस समथिंग, राइट. या उससे छोटा रहेगा, दैट्स ऑल यू नीड टू केयर अबाउट. सो ये काम नहीं करेगा, ये दोनों में से काम कर सकता है कुछ भी. सो या तो ए या फिर बी, लेट्स जस्ट फिगर इट आउट. सो कितने टॉर है ये, 1520 डिवाइड करो 76 से. सो 152, वेट, 1 टॉर इज मिलीमीटर एच, राइट. सो एक्चुअली दिस थिंग centimeter Hg upon 76, right, which is, yes, it's just 2 times of that. It's like it's just 2 atmosphere, so that's 10 power 5 in SI units. Okay, और तुम्हारा वॉल्यूम चेंज कितना है, just 200 milliliters. Oh, that's like 0.2, so 1/5 in SI units. This is the thing, but in kilojoules कितना होगा ये, 100/5 is 20, so 20 kilojoules वर्क इस पे किया. मतलब कि wait, is that correct or not, 20 kilojoules, right? It's kind of weird. अच्छा नहीं, ये क्या था 200. सो हाँ, मतलब ये अपन ने जो किया था, गॉड कहाँ पे चला गया,
15760, right? It's just two atmosphere. अजीब हो रहा है ये. 760, right? So it's just that 2 atmosphere, 2 times of 10 power 5. ये पता नहीं क्यों आ गया. Okay, then so that's just pressure. और कुछ delta V है, you can figure that out, which is 200. Oh, that's why you had that 1/5, right? I guess, yeah. 0.2. So that makes sense. 0.2 ले लो इसको यार, मतलब ज़रूरत नहीं. Yeah. तो किलो जूल्स में कितना होगा, यहाँ पर 100 डाल दो. सो 2 times 2 times 10, यानी कितना 40 किलो जूल्स. सो ये क्या हो जाएगा 84. नेक्स्ट क्वेश्चन. The heat capacity of liquid water is this thing, while the enthalpy of fusion of ice is this thing. What is the smallest number of ice cubes at 0 degrees Celsius, each containing 9 grams of water needed to cool 500 gram of liquid water from 20 degrees Celsius to 0 degrees Celsius? Okay, so 20 times 1. 500 grams. Okay, 20 times 500 times 1. इतनी अपने को हीट निकालनी है. एंड क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, 0 डिग्री सेल्सियस पर के क्यूब यूज़ कर रहे हैं, राइट? सो और क्या है, हीट, द हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज़ दिस थिंग. आई डोंट लाइक दैट. मैं अपने नॉर्मल, ओके मे बी आई शुड यूज़ दिस थिंग. ओके ठीक है, वही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्या मतलब हाइपोथेटिकल वैल्यूज दिए होगे. ठीक है. सो 500 ग्राम्स ऑफ लिक्विड वाटर है. कुछ ऐसा है इसमें चाहिए इन लोगों को, सीरियसली. So 20 times 0.5 kgs times ये चीज़, so 75.6, that's the amount of heat in joules, and that is equal to जो भी mass अपन ने लिया होगा cubes का, that times the latent heat of course, which is just 6, right? Yeah, it's like that's kilojoules. Okay, so 6000 I would have to use. God, this is very weird. ठीक है, तो 6000 है फिर ये. So ये हो जाएगा 10 in this case. So like क्या है ये, 756 is equal to m times 6000. और ये assignments में, remember that, of course. So mass is just 756 upon 6000. God, it's like 115. So you need, okay, 1 2 36 you just need 6, right? Okay, that upon 1000, so 0.126 kgs, which is like 126 grams. So yeah, और फिर डिवाइड करो इसको किससे, 9 से, राइट? सो अपने को 14 क्यूब्स लगेगा. ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन. एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड दी साइकिल ABCD as shown. The net work done during the cycle is equal to ABCD. हाँ, net work done during the cycle. God. So ABC प्रोसेस में ये वर्क हुआ है, राइट? ओके, मतलब श्योर वॉल्यूम इंक्रीज हुई, सो इट्स जस्ट पॉजिटिव वर्क. और फिर इसमें भी सेम वर्क हुआ बट इन नेगेटिव, राइट? राइट. So it's just 0 basically. Yeah, right, because it's like volume to mean सही है 0. Next question. A sample of 2 kg of helium assumed ideal is taken through a process ABC, and another sample of 2 kg of the same gas is taken through the process ADC. So एक को तुमने ABC में और एक को ADC में. Okay, कितना है, 2 kg helium, temperature of the state A and B are. बट आई डोंट गेट इट. तो तुमने ये दो अलग अलग प्रोसेसेस की, बट उसका मैं क्या करूँ आखिर? अच्छा नहीं, तो तुम ये चीज़ें यूज, ओके, यूज द फैक्ट इट्स लाइक स्क्वायर और समथिंग. दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज लाइक ओके, दिस इज काइंड ऑफ वियर्ड. assumed ideal, temperature of the states A and B are. This is really weird, you know. Wait, but how do I get that? So you got कि अच्छा ये pressure है which is in what SI units? I can't see anything. 10 power 4. Okay,
दिस इज़ लाइक 0.5 एटमॉस्फेयर, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर. तो वी जस्ट वांट द टेम्परेचर्स. और ये क्या है, वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब्ड. हाँ, yeah, not really nice. You can use the fact. Whatever. A के लिए क्या है, PV value is just, so just have to divide by NR, right? N कितना है, so it's a 2 kg of helium, or helium is mass 4, right? So half a mole, N equal to 1/2. Okay. R की अपने को वैल्यू दी है इन असाइनमेंट्स. ठीक है, करते हैं ना. व्हाट्स द बिग डील. 10 पावर 5 टाइम्स ये मतलब क्या, 10 पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे पी वी की वैल्यू. यास लाइक ए के लिए जो टेम्परेचर है, जस्ट दिस थिंग, एंड देन अपॉन, सो पी वी अपॉन एन आर, मतलब कि 1/2 टाइम्स आर, विच इज़ वट एवर दैट थिंग इज. सो या जस्ट 2 टाइम्स ऑफ 10 पावर 5 अपॉन आर, अपन बाद में कैलकुलेट कर लेंगे. बी इज़ वॉट, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 टाइम्स है, लाइक 4 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, वॉट एवर. So 8 times 10 power क्या है ये, 5/r. Yeah, now just put that in there. So this is just 8.3 joule per mole Kelvin, whatever. हाँ, so at least B का T should just be 4 times of that. तो ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये ओके हो सकता है, एंड ये सही नहीं है. So like this is must be the thing. Next question, a cyclic process ABCD is shown in the PV diagram for ideal gas. Which of the following diagram represents the same process? ABCD क्या, सॉरी. अच्छा ये चीज़, राइट. सो इट्स अ PV कर्व और अपने को VT कर्व चाहिए, राइट. ओके, सो आई एम गेसिंग कि AD और BC जो है, दोज आर कांस्टेंट टेम्परेचर्स, राइट. सो इसमें तो नहीं दिख रहा मुझे कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, नॉट गुड. अच्छा ये AB है, सॉरी. वी वांट DA फर्स्ट ऑफ ऑल. सो DA, नोप. DA is constant temperature, right? So it should just be a vertical line. So ये okay है. BC is like this thing. Okay. और इसमें हो क्या रहा है exactly? इसमें तुम्हारा pressure constant है and volume is changing, right? इसमें तुमने volume constant कर डाली वाला. That's not good. So this is wrong. It should really just be DA and BC, which are vertical lines. What is this? BCDA once again, yeah. But ये जो टाइप की चीज़ है, what is this exactly? Oh, अच्छा ये CD है. CD पे तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट. सो राइट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट शुड बी CD, मतलब ये, वी आर गोइंग फ्रॉम C to D. सो आई गेस दिस इज द थिंग, राइट. A B C D. So D to A, it's constant. What is this thing? Constant temperature. Yes. So you have constant temperature. Then A to B, constant pressure. Yes, looks like that. Next question. 1 mole of an ideal monatomic gas expanded irreversibly in 2-stage expansion. State 1, state 2, state 3. Total heat absorbed by the gas in the process is. Okay. Ideal monatomic gas expanded irreversibly in 2-stage expansion. ठीक है ना, no big deal. Work अपन निकाल लेंगे. And okay, so atmospheric pressure, should I actually take that to be the same everywhere or something like that? I guess. Wait, बाहर का जो प्रेशर है, how would I know कि वो कितना है? Like how can I even figure this out? Because okay, this is kind of weird. एक काम कर देना फिर, नहीं, okay, that's not the way it should be. I just hate this. State 1 is this, then state 2 is तुम्हारा प्रेशर चेंज हो गया, तुम्हारा वॉल्यूम चेंज हो गई, बट टेम्परेचर स्टिल सेम है. ओके, एंड स्टेट 3 इज दिस थिंग. सो सेम टेम्परेचर है. टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड. अपन मिनिमम वैल्यू वगैरह देख सकते हैं, राइट. आई गेस वी कैन. ओके, टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट रह रहा है, तो तुम्हारा जो वर्क है दैट इज द सेम थिंग एज योर हीट, वो हो जाएगा. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ओके, बट लेट्स वरी अबाउट दिस थिंग एटलीस्ट. तुम्हारा जो हीट तुमने निकाली है, लाइक हीट इज जस्ट इक्वल टू व्हाट. दिस इज नॉट गुड बिकॉज we don't know what the work done is, so how do you figure out the heat?
Oh God. बट हाउ कैन यू फिगर दिस आउट, बिकॉज अपने को पता ही नहीं है हो क्या रहा है. अगर ये रिवर्सिबल होता दैट वुड बी गुड, बट 16 liters. इट सीम्स इट्स लाइक कांस्टेंट टाइम. ठीक है. सो एन आर टी नेचुरल लॉग 2 होगा अगर, ओ सॉरी नॉट 2, ये चीज़ 32/8 अगर ये रिवर्सिबल होता तो, राइट. बट वी डोंट नो हाउ द वर्क इज, बट ठीक है जो भी है, जस्ट अज्यूम दैट. और जो तुम्हारा टेम्परेचर है दैट्स एक्चुअली कांस्टेंट. और बाहर का टेम्परेचर कैसा है आखिर, वी वोंट एवर नो. हाँ, बट ये तो काम ही नहीं करेगा, बिकॉज अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ देन हाउ एम आई सपोज टू नो कि बाहर का टेम्परेचर कितना रहने वाला है. गॉड दिस इज़ नॉट गोइंग गुड. प्रेशर तो चेंज हो रहा है एटलीस्ट. मे बी डेल्टा जी निकाल, नो कुछ ही कुछ हो जाएगा, राइट. सो आई डोंट नो हाउ टू डू दिस वन. ओके, एटलीस्ट ये एक्सपांशन है, तो जो बाहर का प्रेशर है दैट इज़ लेस देन अंदर का प्रेशर एट ऑल टाइम्स, राइट. आई गेस यू कुड से दैट. ऐसा भी नहीं कर सकते, बिकॉज हु नोज, कुछ काइनेटिक एनर्जी का भी इसमें कंपोनेंट होगा. नहीं यार, ये तो सॉल्वेबल ही नहीं है इस टाइप से. दिस इज़ द वर्क डन अगर ये जस्ट वैसे हो जाता है तो. इन रियलिटी वी नो कि एक्चुअल में लेस वर्क होने वाला है देन दिस थिंग, राइट. उस बाहर का प्रेशर कम होगा. सो या वेल ओके. अज्यूम करो जो कंटेनर है उसकी लेड मासलेस है. ये कैसा घटिया अजम्पशन था. ठीक है यार. सो इससे कम वर्क होगा तो हीट इससे कम रहेगी. दैट्स व्हाट वी आर अज्यूमिंग. ओके फाइन. सो जस्ट डू दिस थिंग. एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ 8. टी कितना है 300 एंड आर इज जस्ट 8.3 वॉट एवर. सो लाइक वन सेकेंड 2.49 राइट, 2.49 और 1 मोल है. सो जस्ट 1. Natural log of 8 is like 3 times of natural log of 2, which is 0.7 basically, so 0.7. Yeah, approximately 2.5 का डालो इसको. 2.5 times 3 times 0.7. So ये कितना हो जाएगा, 7 times ये कितना होता है, 14 and then 35 is 175. So 1.175 I guess, because wait नहीं 175 और फिर अपने को 2.6 like 1.75 right. That times of 3 मतलब क्या, 5 1 कैरेट ऑन 21. यहाँ पे क्या जाएगा 2 कैरेट ऑन 5.25 लाइक दैट. और ये बहुत छोटा है, सो आई डोंट नो नन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नेट वर्क इन कैलोरीज बाय 1 मोल ऑफ, गॉड दिस डजंट मेक एनी सेंस. हाउ डज दिस इवन मेक एनी सेंस. डजंट. Oh, okay, ये किलो जूल्स में आएगा, सॉरी. दिस इज इन किलो जूल्स. Oh, then it's like 5250 around that, और उससे कम एक्चुअल में. So I guess this is a good approximation. I don't know. Next question. Yeah, that should be the thing. What is the net work in calories by 1 mole of monatomic ideal gas in the process described by 1 2 3 4 in given VT graph. This is what volume versus temperature, work done in calories by the 1 mole of monatomic gas. ठीक है. So 1 to 2 जा रहा है, which is a constant temperature, then it's like this, and then oh god, ये तो बहुत गंदा होने वाला है, राइट. कांस्टेंट वॉल्यूम एक इसमें है, सो इसमें कोई वर्क नहीं हुआ. यू विल हैव टू फिगर आउट 1 to 2, 2 to 3 और राइट दीज वर्क्स. अच्छा, 1 to 2 इज कांस्टेंट टेम्परेचर, सो द वर्क डन इज जस्ट एन आर टी. सो एन तो 1 है, जस्ट आर टी दैट यू हैव टू लुक फॉर. और ये 300 है, सो जस्ट यू नो क्या था वो 2490. ओके, दैट्स अवर आर टी वैल्यू. फिर नेचुरल लॉग ऑफ ये चीज़, सो जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ 2 बेसिकली इस चीज़ में, राइट. ओके, उसके बाद में इस वाले में वर्क क्या हो रहा होगा. इस वाले में तुम्हारी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो फिर तुम नेगेटिव वर्क कर रहे हो, राइट. सो नेगेटिव, और इसमें 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग है, सो लाइक 2 टाइम्स ऑफ ये चीज़ 2490. और फिर नेचुरल लॉग ऑफ क्या, इट्स गोइंग फ्रॉम v इक्वल टू 40 to 10. सो बेसिकली 4, नेचुरल लॉग ऑफ 4, राइट. सो यहाँ पे 4 कर डालो एंड देन जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ 2, राइट. ओके, ये हो गया. और फिर ये वाला वर्क.
So it's just yeah, nr delta t. Yeah, because p is a constant, right? Because v versus t constant है. So delta pv which is like delta nrt. So nr delta t मतलब कितना, और इसमें तुम्हारा टेम्परेचर एक्जैक्टली हो क्या रहा है, तुम्हारी वॉल्यूम तो इंक्रीज होती है ना. ठीक है, एन आर is just okay r basically. So r is, then you want delta t is 300 once again. So r ठीक है, वो आप पहले तुमको पता है 2490, right? Yeah, exactly. So this is the thing I guess. मतलब क्या 2490 कॉमन ले लो. Oh, you wanna use calorie? What? But why? फिर अपना जो हर जगह पे हो रहा है 300 केल्विन टाइम्स आर, दैट इज दिस थिंग 2 कैलोरी पर मोल केल्विन वॉट एवर. सो 600 चाहिए हर जगह पे फिर, इंस्टेड ऑफ दिस बिग नंबर 600 एवरीवेयर. यू गेट द थिंग. सो लाइक इसकी जगह पे 600 कर डालो एंड देन रिमेनिंग पार्ट सेम है, विच इज बेसिकली लाइक नेगेटिव 3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1, सो 1 माइनस 3 नेचुरल लॉग ऑफ 2, राइट? या दैट लुक्स गुड. सो दिस इज जस्ट क्या 0.3 लाइक 0.9 हो जाएगा ये, मतलब कि 0.1 टाइम्स दिस थिंग, सो 60 calories. Oh, natural of, okay fine. So 3 times of this thing यानी कि 2.1. So क्या negative 1.7, negative 1.1. क्या कर रहा हूँ मैं आज, negative 1.1 times this thing, right? So negative 11 times 60 मतलब कि negative 660, which is this thing. Next question. An insulated container of gas has 2 chambers separated by an insulating partition. One of the chambers has volume V1 and contains ideal gas at pressure P1 and temperature T1. The other chamber has volume V2 and contains same ideal gas at pressure P2 and temperature T2. Okay, if the partition is removed without doing any work on the gas, the final equilibrium temperature of the gas in the container is. तो ये जो है oh it's an insulated container, perfect. मतलब adiabatic process है, right? तुम्हारा जो energy that's actually constant. So what can you say? You can just say कि oh and by the way तुम्हारा n जो रहेगा like PV equal nRT, right? Okay, n1 T1 plus n2 T2 is equal to n1 plus n2 times T, right? Final temperature अपने को ये, yeah, so like T is just equal to n1 T1 plus n2 T2 अपॉन n1 plus n2. अब अपन n1 plus n1 n2 क्या है अपन ये दिखा देते. So PV upon RT that's equal to n, right? So PV upon n, okay, PV upon T put करो हर जगह पे to get thing done. So this is just P1 V1 plus P2 V2 upon P1 V1 upon T1 plus P क्या कर रहा मैं plus P2 V2 upon T2. सारे constants हटने वाले हैं, so बस ये चीज़, right? तो yeah that's the thing, which is just P1 V1 T2 और क्या होगा T1 T2 ऊपर जाएगा, राइट? ओके, दिस लुक्स करेक्ट. क्या है ये? ओके, ये इनकरेक्ट है, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is 1 mole of an ideal gas is allowed to expand reversibly and adiabatically from a temperature of this thing, so 300 Kelvin. Okay, if the work done by the gas in the process is 3 kilojoules, the final temperature will be equal to. Seriously, तो तुमने work done by the gas निकाल लिया, then the final temperature will be. और initially क्या था, temperature 27 degrees Celsius, right? Okay, NCV delta T. So it's work done by the gas और heat तो 0 है, so this is just equal to 3. और यहाँ पे एक्चुअली क्या चाहिए, ये लॉस इन टेम्परेचर होना चाहिए बेसिकली, डेल्टा टी चाहिए. ओके, सो दिस इज जस्ट 3 times of 10 power 3 in SI units. और इट्स लाइक आइडियल गैस एंड व्हाट काइंड ऑफ, तो इट्स मोनोटॉमिक डायटोमिक हो क्या रहा है. अच्छा, तुम्हें CV दिया है इंस्टेड ऑफ गिविंग अस R, और इट्स 1 मोल, तो ये तो हटा दो. सो इट्स जस्ट 20 in this case, right? So delta T is just equal to what? 3000 upon 20. Looks good. It's just 150, तो फिर 150 है और इनिशियली 300 था. छोड़ो ना, वो कितना देखना है. सो जस्ट दिस थिंग minus 150, 300 minus, okay ठीक है, 150 Kelvin. Next question. A gas CV is whatever behaving ideally was allowed to expand reversibly and adiabatically from 1 liter to 32 liter. Its initial temperature was this thing. The mole enthalpy for the process is, molar enthalpy for the process. Oh, okay.
1 liter to 32, so it's like ncp delta t, right? Okay, so cv ये है, तो cp क्या होगा 7/2, 7/2 r एंड 1 मोल, राइट? और वॉट, अच्छा मोलर देखना है ना, तो 1 मोल ले लो। ncp डेल्टा टी चाहिए अपने को, दिस टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा अपने को वॉल्यूम चेंज दिया है, गॉड दैट्स नॉट गुड। 1 to 32 लीटर, राइट? आई डोंट लाइक दिस, चलो ठीक है कर लेते हैं एक बार का। सो वी टी पावर एफ अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कि व्हाट यू से, जस्ट टी वी पावर 2 अपॉन एफ। वेट, जो लास्ट टाइम अपन ने किया था उसमें टी की पावर, शिट, नहीं इसलिए वो 2 अपॉन एफ था, तो वो काम बन जाएगा, राइट? सो ये जो चीज़ थी कहाँ पे चला गया वो, ये चीज़ इसमें शायद से मैंने कहीं तो भी एफ अपॉन 2 की जगह पे 2 अपॉन एफ लिख दिया होगा, बट वॉट एवर, स्टिल आई अज्यूम कि वो करेक्टली काम कर जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये करते हैं, राइट? सो अब क्या होगा, टी इज़ प्रपोर्शनल टू वी पावर नेगेटिव 2 अपॉन एफ, राइट? या आई गेस सो। और सो लाइक जो अगला टेम्परेचर होने वाला है, सो इट्स इनिशियल टेम्परेचर वॉज वॉट, टी आई इज इक्वल टू 600 Kelvin. So what's T final going to be? T final is going to be Ti times V2 upon V1 की power negative 2 upon F. It's like V1 upon V2 की power 2 upon F. And what is that? So it's just 1 upon 32. अच्छा V2 upon V1 use कर लेते ना? Yeah, I guess so. It's like V2 upon V1 is 32. 32 की power क्या? Negative 2 upon F. So negative 2 upon. कितने degrees of freedom है इसमें? CV is this thing like 5 of course, right? Yeah. This is just going to be 2, so it's just 1 upon 4, Ti upon 4 I would say. So T final is 150, it's just 150 Kelvin, that's the final temperature. So ये चीज़ अपने करनी थी, क्या कहाँ पे गई है, डेल्टा टी, दैट इज़ जस्ट या लाइक एंथैल्पिक चेंज है अपने को, वो निगेटिव में आएगा, आई नो दैट, दिस टू दैट ऑफ कोर्स विच इज़ 450, राइट? सो कूल, मतलब क्या 7 times this thing is seriously 7 times 225 times r, मतलब 5 3 carried on, यहाँ पे आ जाएगा 14, just 7 1 carried on 14 and just 1575 r. Next question, an ideal gas undergoes a thermodynamic cycle as shown, which the following graph represents the same cycle. So ABC, okay, ये V वर्सेस T है और अपने को चाहिए है P वर्सेस T, राइट? ओके, सो C/A में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो C/A कहाँ पर है इसमें, C/A टेम्परेचर कांस्टेंट, गुड। C/A ये तो गलत हो गया, C/A ये भी गलत है, ओके ये भी गलत है, ओह वाह बढ़िया ये तो अपने आप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अ डायटोमिक आइडियल गैस इनिशियली एट समथिंग 273 Kelvin, ऐसे गंदे नंबर्स कौन देता है यार, इज़ गिवन 100 कैलोरी हीट ड्यू टू विच system did 209 joules work. Molar heat capacity of the gas for this process is, तुमने हीट दी उसको और सिस्टम डिड दिस मच ऑफ वर्क, the molar heat capacity, oh okay, you just need to figure out the temperature change, right? ये बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है यार, I don't like this. Okay, so ठीक है करते हैं, ट्राई करते हैं। डायटोमिक आइडियल गैस अपनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 5, ओके, वर्क डन इज दिस थिंग एंड यू गेव दिस हाउ मच ऑफ हीट, 100 कैलोरी हीट, लाइक 4.2 रहता है ना, लाइक ओके just 420 basically 420 joules, so our heat provided is just 420 joules, work done on the system is negative 209, so basically तुम्हारा जो delta U है that is maybe a 419 है, I don't know, so मैं approximately 210 ले रहा हूँ because you know for simplification purposes, so ये हो जाएगा 210, right? That's the delta U thing which is also equal to NCV delta T, N1 ले लो, so just CV delta T
कितने मोल्स है? आई डोंट नो. मोलर हीट कैपेसिटी चाहिए ना. सो हाउ डू यू नो कितने मोल्स हैं इसमें? यू डोंट. व्हाट? बट फिर अपन कैसे करेंगे? दिस डजंट मेक एनी सेंस. Okay, we got delta U. This is like NC जो भी CV, which is F upon 2, like 5 upon 2 times R. Okay, what do you want? Just want like Q upon delta T, right? That's our heat capacity. Delta T is just 420 upon 5R. So this upon that, which is 5R. So 5R is our heat capacity. Molar पता नहीं, but heat capacity है. For an ideal monatomic gas doing any process T equal to kV, find out the molar heat capacity of the gas during the process. Assume vibrational degrees of freedom to be active. Okay, well whatever, at least we know कि इसको कैसे करते हैं. Molar heat capacity, right? Okay, so like क्या ये TV power -1 is equal to K. Now we know that TV equal nRT, so T is proportional to PV. This is basically like saying कि P times nothing. Okay, so V power 0 is kind of a constant, right? So a constant pressure है ना basically. Yeah. So NCP, right? The molar heat capacity is just CP by definition. जैसे मोनोटोमिक गैस, हाँ, और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिव है, और कितने हैं? डू वी इवन नो दैट? इट्स सपोज टू बी CP. ओके, इट्स लाइक 3.2 + 1 तो एटलीस्ट होना चाहिए. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं यार? आई डोंट नो दैट. आई डोंट गेट इट. मैं कैसे बताऊँ कि कितने हैं टू बी एक्टिव? व्हाट? हाउ डू आई नो कि कितने डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशन फ्रीडम है उसके पास में? जस्ट अज्यूम 3 है शायद से, राइट? अज्यूम 3 है. It's a monoatomic gas though, so how can you even have that thing in there? You know what? Nah, I'm just gonna ignore that. So ideal monoatomic gas, right, like helium or something. So 3 degrees of freedom, cool. 3 upon 2 plus 1, right? So just 5 upon 2R. I don't know man, ये तुम्हें मुझे पता ही नहीं कितने freedoms है, so how can I even do anything? 1 mole of an ideal monatomic gas is caused to go through the cycle shown in the figure. Then the change in the internal energy in expanding the gas from A to C along the path ABC. Along the path ABC, you want what? Change in internal energy. Okay. So यहाँ पे क्या है? P not V not, और फिर यहाँ पे just NCV delta T, right? So it's an ideal monatomic gas. So like 1 mole, so like 3 upon R delta T, और R delta T कितना होने वाला है? just delta PV, which is how much? यहाँ पे P naught V naught है, यहाँ पे कितना है? 8 P naught V naught, like 7 P naught V naught. That's what you look for. So like 21 upon 2, which is 10.5 P naught V naught. Yeah, or RT naught, whatever, that works. हाँ, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड. इसमें तुमने टी नॉट तो बताया नहीं कि एग्जैक्टली है क्या. अच्छा, ये बताया है. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मास m. ऑफ कोर्स मैन, व्हाट कैन हैपन? दैट हैज टू बी द थिंग, ऑफ कोर्स. दैट हैज टू बी. देन द चेंज इन एनर्जी इन द फ्रॉम A to C. सही है, वो तो वैसे ही होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द expansion of an ideal gas of mass m at constant pressure P is given by the straight line B. टेम्परेचर नेगेटिव में कैसे लिया इन लोगों ने? अच्छा, of mass m, constant pressure P is given by the straight line B. Then the expansion of the same ideal gas of mass 2m at pressure 2P. What is going on? Like, this is not making any sense. I get it कि V upon T is in the proportion to 1 right, is proportional to 1 upon P और everything. I think वॉल्यूम की लाइन यहाँ पे होनी चाहिए थी, बट इन लोगों ने ऐसा किया है.
वॉट डज दिस इवन मीन? कांस्टेंट प्रेशर ऐसा तो नहीं दिखता यार, कुछ ही कुछ है ये। ओके, एक्सपांशन ऑफ द सेम आइडियल गैस ऑफ मास 2m, प्रेशर 2p, फ़र्क नहीं पड़ता मास क्या है। वेट, एक्चुअली पड़ता है, बिकॉज पी वी इक्वल टू एन आर टी, सो वी अपॉन टी इक्वल टू एन आर अपॉन पी, सो इट्स लाइक एन अपॉन पी से प्रोपोर्शनल है, राइट? दैट्स अवर स्लोप। सो इसका एन 2 टाइम्स हो गया, प्रेशर 2 टाइम्स हो गया, तो सेम स्लोप रहेगा, राइट? इट्स स्टिल बी वॉट एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of an ideal diatomic gas is taken through the cycle as shown in the figure. So क्या है, करना क्या अपने को? एवरेज मॉलिकुलर स्पीड ऑफ द इंटरनल ऑफ द गैस इन द स्टेट्स 1 2 3 आर इन द रेशियो 1 2 3, इसमें क्या एवरेज मॉलिकुलर स्पीड्स, हाँ ठीक है ना, वी आर एम एस बोल रहे हैं या फिर वी एवरेज बोल रहे हैं, वॉट एवर, अपने को रेशियो देखना है सिर्फ। सो या टेम्परेचर इसमें कितना है, इसमें 1, इसमें 4, सो 1 4, और फिर इसमें कितना है, इसमें भी 4 है, राइट? सो स्क्वायर ऑफ टी मतलब कि 1:2:2 रेशियो में रहेगा, इज दिस थिंग कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal gas undergoes an adiabatic process of being the relation PV power 4/3 equal to constant if its initial temperature is 300 Kelvin and then its and then its pressure is increased up to 4 times its initial value. Then the final temperature in Kelvin is what? Adiabatic process of being the relation is initial temperature is 300, temperature को तुमने increase किया up to 4 times, ठीक है, घटिया सा कुछ। PV fractional temperature, it's like V power 1/3, that's equal to constant basically. So T is proportional to V power, अच्छा नहीं इसमें V चाहिए ना अपने को, फाइनल टेम्परेचर, oh okay wait something's going weird over there, अच्छा तुम्हें V नहीं चाहिए, तुम्हें V नहीं चाहिए, so P cube V is P cube V power 4 actually, it's kind of constant, right? You don't want V, V is proportional to T upon P, so P power 3 T power 4 upon T upon 3 is kind of a constant, मतलब क्या, sorry T power 4 चाहिए यहाँ पे, so P is proportional to T power 4 in that case, right? प्रेशर को तुमने इंक्रीज किया up to 4 times its initial value, so temperature will be increased by like square root of 2 times, so 300 square root 2, yeah. Next question, it's got to be the thing, sure. Yes, that's right. Next question. The figure shows the graph of logarithmic reading of pressure and volume for 2 ideal gases A and B undergoing adiabatic process. From figure it can be concluded that wait, what, it's going adiabatic, oh so it's P or V hai, okay, it's like PV power gamma, it's kind of a constant, it's like natural log of P plus gamma natural log of V is a constant, so natural log of P versus natural log of V का slope क्या होगा, नेगेटिव गामा, राइट? सो B के लिए नेगेटिव गामा इज, वाओ दैट्स वियर्ड, इसका स्लोप, इसको हो क्या गया एग्जैक्टली ये मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये कैसे हो गया एग्जैक्टली, हुआ क्या यहाँ पे, आई डोंट नो। ये स्ट्रेट लाइन नहीं ना, ओके नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिख रही है वैसे, जस्ट दिख रही है वैसे, ओके। सो इसका स्लोप अच्छा खासा, या ओके, सो स्लोप बड़ा किसका है, ऑफकोर्स ए का मैग्नीट्यूड वाइज, और वेट नहीं बी का बड़ा, एक्चुअली बी का काफ़ी बड़ा है इनफैक्ट, राइट? सबसे बड़ा स्लोप कैसे तुम, सबसे बड़ा गामा की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे? गामा इज जस्ट लाइक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नीचे आएगा और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम +2 आएगा ऊपर, लाइक 1 + 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो गामा को इंक्रीज करने के लिए यू शुड डिक्रीज एफ, सो एफ को मिनिमम रख दो, लेट्स जस्ट से लेट एफ बी 1 और समथिंग, राइट? अच्छा नहीं, एटलीस्ट 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो तुम चाहिए रहेगी ना, बिकॉज ट्रांसलेशनल, राइट? सो 1 + 2/3 विच इज़ जस्ट, या बहुत अजीब टाइप का ग्राफ दिया है, बट चलो ठीक है। सो बी को कम से कम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देनी चाहिए अपने को,
राइट, और ए के लिए स्लोप मुझे 1 दिख रहा है, सो दिस हैज़ टू बी 1, देन दैट जस्ट मीन्स कि ओके ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता ना. सो वॉट एवर दिस थिंग इज, आई डोंट लाइक दिस. जो भी है इसका स्लोप बड़ा है थोड़ा सा. ठीक है, अगर अपने को गैस करना ही है देन जस्ट से दैट गैस बी इज मोनोटोमिक एंड गैस ए इज डायटोमिक, ऑल्दो इसमें से अपने कुछ नहीं समझ रहा है. नेक्स्ट, इफ डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ सब्सटेंस एक्स मोलर मास 30 ग्राम पर मोल इज दिस मच एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, देन मोलर एंट्रोपी व्हाट, सॉरी, डेल्टा एच कितना है. सो मोलर मास कितना है बाय द वे, मोलर मास इज 30 ग्राम per mole. Okay, delta H vaporization, so basically latent heat, right? Latent heat of vaporization, that is 300 joule per gram. God, कौन करता है ऐसा. Its boiling point is 300 Kelvin. Molar entropy change for reversible condensation process. God, दोनों में सेम ही प्रोसेस की बात कर रहे हैं बेसिकली. अच्छा नहीं, इसमें वेपराइजेशन, इसमें कंडेंसेशन, तो इसमें से एक काम करो ना, फिर कंडेंसेशन का डेल्टा एच कितना रहेगा, उल्टा मतलब निगेटिव. सो व्हाट इज डेल्टा एस गोइंग टू बी. मोलर मास हमने को दिया है, मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल कंडेंसेशन प्रोसेस. कंडेंसेशन है तो फिर एंट्रोपी तुम्हारी डिक्रीज ही हो रही होगी, और कोई तरीका तो है नहीं, बट कितनी एंट्रोपी है. अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट 300 है, राइट. सो एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 300 केल्विन इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, राइट. या मतलब of course that actually does make sense, like so तुम्हारा जो प्रेशर रहेगा that is just that. Okay, it's taking forever. Delta H vaporization of the substance is this thing. Come on, think about it. और तुमने ये भी बताया कि ये किस टाइप का सब्सटेंस है. ओके, तो विल हैव टू अज्यूम कि डेल्टा एच काइंड ऑफ कांस्टेंट है. सो व्हाट यू गेट that delta H minus T delta S that should actually be 0 at some certain temperature. ऐसा होना चाहिए, assuming delta H delta S are kind of constants, जो कि अपन वैन ऑफ इक्वेशन वैसे भी करते ही है. so what you have, delta S is just delta H upon T, right? and what is that going to be? okay, so delta H is just a negative 300 joule per, पहले तो इसको कन्वर्ट करो यार, कितने गंदे नंबर है ये. when you want in moles and what not, so it's okay, 300 joules per gram. what is 1 and 1 ग्राम में कितना रहने वाला है by the way, oh god, पर मोल कितना रहेगा. पर मोल पर से 30 ग्राम से, राइट. तो उसके लिए डेल्टा एच कितना होने वाला है, 30 टाइम्स 300 जूल्स, मतलब क्या 9 टाइम्स 10 पावर 3 joules per mole. That's our delta H actually. So just this thing, 9 times 10 power 3. Okay, upon temperature is just 300, so 3 times 10 power 2. That looks good. So इसका मतलब क्या हुआ है, just negative 3 times 10, like negative 30. Yeah, that's the thing. Hopefully. Next question. Process is shown in the diagram. Which of the following curves may represent the same process? So ये क्या है, P versus V. A to B में तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है, और तुम्हें किस टाइप के ग्राफ्स चाहिए तुम्हें, और अलग अलग टाइप की थी इसमें. A to B में तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है और B to C में तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है. ओके, बस देखते इसमें A to B, इसमें तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है क्या, नहीं दिख तो नहीं रहा है, तो ये तो गलत हो गया. A to B इसमें तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं. A to B इसमें तुम्हारा प्रेशर इसमें दिया ही नहीं है, बट हाँ इसमें कांस्टेंट तो दिख रहा है, सो मे बी करेक्ट है ये. A to B तुम्हारी वॉल्यूम कांस्टेंट दी है इस लोगों ने, ये गलत हो गया. सो इज द थिंग, दिस इज द थिंग, सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बार बी टू सी भी देख लेते हैं. सो बी टू सी में तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट दिया इन लोगों ने, विच इज़ या करेक्ट है. नेक्स्ट, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस अपॉन आइसोथर्मल एक्सपांशन एट दिस टेम्परेचर फ्रॉम 20 लीटर until the pressure becomes, oh you want entropy का change. so entropy is basically like nr natural log of vt power f upon, ऐसा मान ही लो ना, entropy is this thing. yeah, that's our entropy. तो तुम्हें चाहिए change in entropy of 2 moles of an ideal gas upon isothermal expansion, तो इसका ये फैक्टर भूल जाओ. okay, at some temperature
फ़र्क नहीं पड़ता अपने को, बिकॉज द टेम्परेचर इज नॉट देयर इन द फर्स्ट प्लेस. फ्रॉम 20 लीटर अंटिल द प्रेशर बिकम्स 1 एटमॉस्फियर. अच्छा प्रेशर दिए, जस्ट हेट दिस. प्रेशर तुमने दे दिया, नाउ यू वांट टू फिगर दिस आउट. ओके, निकालो वॉल्यूम. पी इक्वल एन आर टी, वी इज जस्ट इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी, राइट. सो एन आर टी कितना है रे, 243.6 upon p, which is 1 atmosphere, is like 10 power 5. This is in assignments, this is also in assignments. We want in like atmosphere. Wait a second. अच्छा ये अपने को लीटर्स में चाहिए, राइट. सो एक्चुअली इसको 1 ले लो, एंड देन वी जस्ट टेक आर टू बी 0.082 जो भी है, लाइक 2 times 0.08 कूल, या दैट टाइम्स इसको भी अप्रॉक्सीमेट कर डालते हैं. It's like approximately 250 upon 1. So this is like 2 times 0.8 times 25, right? So 1.6 times 25 यानी कि कितना, बेसिकली क्या 8 हो गया ना. 8 times 5 मतलब कि 40. So क्या हो रहा है ये बेसिकली, तुम जा रहे हो 20 से 40, नेचुरल ऑफ 2 आ गया इसमें, राइट. एन आर नेचुरल ऑफ 2. सो एन इज जस्ट 2 times आर विच इज़ वी डोंट नो अभी तक. नेचुरल ऑफ, राइट, मतलब कौन से इसमें डालना है. ओ इस कैलोरी पर केल्विन में चाहिए, ठीक है, एज यू विश. सो इट्स जस्ट 2 कैलोरी पर केल्विन, राइट. सो इट्स जस्ट 4 नेचुरल ऑफ 2 विच इज़ लाइक 4 times of 0.7. सो 2.8 अराउंड दैट. दिस लुक्स गुड. दैट्स इट आई गेस. 25 क्वेश्चंस डन. सो इसको चेक कर लेते हैं. ओ ये तो लंबा होने वाला है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें. फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का डी. यस, ओह बढ़िया, मुझे लगा नहीं था हो जाएगा, बट ठीक है. फोर्थ का बी. वेट व्हाट, हाँ, व्हाट इज डेल्टा यू फॉर हीट सप्लाइड इज दिस थिंग. वेट, कैन डजंट मेक एनी सेंस. तो हीट सप्लाइड इज दिस एंड हाउ डज इट बिकम -50. आई डोंट अंडरस्टैंड. डेल्टा यू ऐसे हो सकता है. नो, इट हैज़ टू बी +50. तुम्हारी हीट सप्लाइड 100 किलो जूल्स है, और ये देखो ना यार, इट इज़ ओके 2 बार 1 बार विच इज़ लाइक 10 पावर 5. देख लो इसको. सो चेंज कितना हुआ, जस्ट 1, और ये भी 1. सो 10 पावर 5 का हाफ, और इन किलो जूल्स. सो 100/2 50 किलो जूल्स. तुम्हारी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तुम काम कर रहे हो, मतलब ओके गैस काम कर रही है, विच मीन्स कि एक्चुअल में उसके ऊपर वर्क डन नेगेटिव है. सो -50 कंबाइन कर दो 50 किलो जूल्स. सो दिस इज़ रॉन्ग. उनका आंसर करेक्ट नहीं है. फिफ्थ, ये तो यार बहुत एलिमेंट्री था, इन लोगों ने कैसे गलत कर दिया. फिफ्थ बी, सिक्स्थ सी, सेवन्थ ए, एट्थ सी, ओके, नाइन्थ सी, नाइन्थ सी. हाँ, लेट्स सी D2 और ये V वर्सेस T है, राइट. सो D2A तुम बोल रहे हो दैट ओके D2B और वो B2C वो सेम हो रहा है. ओके फाइन. अब C2D देखते हैं. C2D तुम्हारी वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या ये सही है. हाँ ये सही तो है, इसमें भी एक्चुअली कांस्टेंट है. वेट व्हाट, ओह ये दोनों इनफैक्ट सेम ही टाइप के हैं, एक्सेप्ट इसमें उल्टा कर दिया है, राइट. अच्छा तुम्हें टेम्परेचर देखने पड़ेंगे फिर. सो A2D में तुम्हारा टेम्परेचर छोटा है, एंड देन C2B में तुम्हारा टेम्परेचर बड़ा है. दैट्स वाई दिस थिंग. अच्छा फिर मेरा गलत हुआ, ठीक है. मैंने देखा ही नहीं कि इसमें भी वही सेम चीज़ हो रही है जो यहाँ पे हो रही है. ठीक है. 10th C, 11th B, 12th A, 13th C, 14th C, A D. Okay, that's awesome. CAA, yeah, CAA, फिर DCC, yes, DCC वापस. ओके साइड मैंने किया नहीं है. This is it in that case. So I'll see you guys in the next video.